Should we start, my dear friends? Excuse me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Last time I think I have done it with you all, monohybrid and dihybrid cross. Yes or no? Yes, ma'am. Dihybrid cross में I think this was the one which was done at last, if I'm not mistaken. Yes or no? Yes, ma'am. Now over here, I had explained you all how we are getting the ratios also, everything. Phenotypic, genotypic ratio, whatever we have got from monohybrid, you have to multiply it once again, so you get the ratio properly. So you come to know that you are correct, right or wrong. And if I'm not mistaken, I have been towards some laws also, monohybrid and hybrid laws, that is the laws put forward by Mendel's. Law of dominance, law of purity of gametes or law of segregation, and the law of independent assortment. ये तीनों हम लोग ने किया था, बराबर है? Yes, ma'am. हाँ, क्या Ma'am, हुआ? हाँ जी. can you repeat these laws? This laws I'm repeating. क्रॉस तो क्लियर हो गया ना? Yes, मैं ma'am. ये कैलकुलेशंस तो क्लियर है ना पूरा वर्किंग? हाँ मैम, मेरे क्लियर है. अच्छा, तो लॉस तो रिपीट कर रही हूँ ना मैं. लॉस के लिए आपको टेंशन नहीं लेने का है. State the number of laws put forward by Mendel. Mendel put forward 3 laws. Correct? State and explain these 3 laws. Or enlist the 3 laws of hereditary formulated by Mendel. The 3 laws of hereditary formulated by Mendel were law of dominance, law of segregation or law of purity of gametes, and law of independent assortment. Now, state the first law of inheritance. They can ask you a question, state and explain the first law of inheritance with a suitable example. So when you're mentioning this first law, you have to do monohybrid cross. Please be careful. Law of dominance. It is the first law of inheritance by Mendel. Statement. The law states that when two homozygous contrasting individuals differing in one or more pairs of contrasting characters are crossed, then the character which is expressed in the F1 generation is called as dominating character. And the one which fails to express itself or which is suppressed is called as the recessive character. This was the first law. State and explain the second law of inheritance. The law of segregation or law of purity of gametes is the second law of inheritance by Mendel. Statement. The law states that when a pair of alleles is brought together in F1 hybrid, they remain together without mixing, altering, or diluting each other, and segregate or separate at the time of gamete formation, that is in the pure form. Next, state the third law of inheritance. The third law of inheritance is law of independent assortment. It states that the law states that when two parents differing in two or more pairs of contrasting characters are crossed, then the characters assort out from each other and the inheritance of each character is independent from the other during the F2 generation. Now, why are farmers and gardeners advised not to buy new F1 hybrid seeds every year? Farmers and gardeners are advised to buy new F1 hybrid seeds every year for the following reasons. Hybrids do not breed true in the F2 generation. If seeds collected from hybrid plants are sown, characters in the progeny will segregate, or law of segregation. The characters may assort and the inheritance of each character is independent. Law of independent assortment. It does not maintain original hybrid character, because hybrid itself is by means of a cross. Whether that is a pure hybrid or no, you never know, no? That's why.
इसके बाद में ये सब तो आपका खुद का सेट है, तो ये I have done it, but not necessary. You all have to do it. Now we are going or moving towards the three basic crosses. Now you have to pay very much attention towards the crosses, huh? The three crosses which I will be doing right now, which is very important for you all to understand. We have heard about the three terminologies, that is back cross, test cross, and reciprocal cross, or reciprocal cross, back cross, and test cross. Reciprocal cross, back cross, and test cross. Okay, coming to the first one, reciprocal cross. Can anyone have answer me, what do you mean by the term reciprocal cross? Can anyone? मैम इन अपॉन हाँ, टर्म होगा वो अपॉन में आएगा. टर्म वो जो F1 में आएगा वो. Inverse. No, I want the meaning of the reciprocal cross or the meaning of reciprocal basically. What do you mean by the term reciprocal? आपको मेरे को बताने का, this is a reciprocate or reciprocal of this and this. तो आप वो कैसे बताओगे मुझे? आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में वगैरह लिखते हो ना, 1 upon something, maybe 10 or maybe 20. तो आप इसको बोलते हैं ना, it is reciprocation of this, reciprocal of ऐसा 20 and all that. Yes or no? Yes, ma'am. हाँ, तो इधर ये बात आपको ध्यान में रखने का है, it is not that way. Here it is, sexes are reversed. Or interchanged. Sexes are or reversed or interchanged. That is reciprocal cross. Now, what do I mean by that? इसमें आपको ये बात दूसरा ध्यान में रखने का है, progenies of reciprocal are identical. Sexes are reversed or interchanged, then the progenies of reciprocal cross are identical. This part we are going to verify it. I am taking parent P1, genotype, gamete, and F1. Parent P1 I am taking pure breeding tall crossed with pure breeding dwarf. Pure breeding tall crossed with pure breeding dwarf. जीनोटाइप बोलो, प्योर ब्रीडिंग टॉल का जीनोटाइप बोलो. Capital T. हाँ, एक ही बार. हेलो, कैपिटल टी ओनली वंस. Twice, ma'am. हाँ तो बोलो ना, फिर एक ही बार क्यों बोल के चुप हो गए? फिर नेक्स्ट वन, प्योर ब्रीडिंग ड्रॉप इज Small t twice. ओके. व्हाट इज द गैमेट? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ये तो सेम ही है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, क्योंकि आप नहीं बताया, मैंने हाँ, नहीं मैम. लिखा है. हाँ, ma'am. ओके. अभी इसका F1 क्या आएगा? Capital T, small t. इसमें क्या आएगा? Capital T, small t. ओके.
Naomi, you may be wondering why I've written this entire thing twice. Same ही तो है, क्या इसमें difference है? Correct? You're wondering, na? Yes, ma'am. Okay. Now here I've taken the male plant as tall and female plant as dwarf. In this cross, I have taken the female plant as tall and the male plant as dwarf. I've interchanged the sexes because the flowers are bisexual. So I've interchanged the sexes. On interchanging the sexes, I get the progenies are identical. Yes or no? Yes, ma'am. So that is what has been explained over here. Ma'am. Okay. So reciprocal cross is when the sexes are interchanged or reversed. Whatever you are taken as a male parent, you are taking as a female parent that time. Correct? Yes, ma'am. Here I am taken male dwarf. Here it is female dwarf. Here I have taken female tall. I have reversed it. Yet the progenies are identical. ये हो गया अपना reciprocal cross का. ये maybe it is not there in your textbook. The word is at least there. And if at all you are going for your NEET and all such things, you will come across. That's why I have to do it. Then going towards the back. Ma'am, reciprocal cross dihybrid cross. हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, उसमें भी सेम ही होएगा ना. मैम मोनोहाइब्रिड में भी होगा. ये तो मोनोहाइब्रिड का तो दिखाया आपने. हाँ मैम. करेक्ट. अभी इसमें डायहाइब्रिड कर दो तो वो भी वही सेम दिखेगा ना. ओके मैम. Reciprocal is no way concerned with the characters or number of characters also. Reciprocal means it is only the sexes that are interchanged. First, the characters कितने भी ओके होंगे. मैम. Okay. Now coming to the next one, back cross and test cross. I am taking parent P1, genotype, gamete, F1, parent P2, genotype, gamete, F2. Okay. Now, I am taking pure breeding tall plant crossed with pure breeding dwarf plant. Correct? What is the genotype of tall? Capital T. Capital T twice. Capital T. Capital T. And capital T. आगे बोल. Okay. What is the genotype of this? Small t, small t. Okay. What is the gamete of this? Capital T with circle. And what is the gamete of this? Small t with circle. Very good. What is F1? Capital T, small t. Hybrid or heterozygous? Stall. यहाँ तक तो अपने को आता है. Yes, ma'am. मिला तो अभी से हो रहा है, यहाँ से होगा. Okay. When this F1 is crossed with the dominating parent or it is crossed with the recessive parent. When this F1 is crossed with dominating parent or with the recessive parent, we have to see what is going to happen. ये F1 को, this F1 is crossed with this one as well as with this one. We will see what is going to happen in the next generation. Agreed? That is the part which you have to study now. Now, it is not possible in human society. But to make you understand, I am telling this statement. Please be careful. It is not possible. But to make you understand, the statement is being used. I get married to my father. Means I am going one generation back. Yes or no? Yes, I ma'am. am Yes, ma'am. one generation back. My brother gets married to my mother. Going one generation back. The same thing, this F1 is crossed with this dominating parent, or this F1 is crossed with this recessive parent.
दोनों के तरीके से ये एक जनरेशन पीछे ही जा रहा है ना, तो वी कैन कॉल इट बैक क्रॉस. Yes, ma'am. What is a back cross? A back cross is when F1 generation is crossed with either a dominating or the recessive parent. It is called as a back cross. What is back cross? Back cross is F1 crossed with dominating or recessive parent. It is called as back cross. Do you all agree with that? Yes, ma'am. Okay. Now we are going to see the cross first and then proceed further. Okay. Yes, ma'am. Parent P2. I am taking F1 crossed with dominating parent. Correct? F1 crossed with recessive parent. वो बाद में देखेगा. F1 क्या है अपने को मालूम पड़ा था, ये कैपिटल T स्मॉल t crossed with कैपिटल T. इसके गैमेट्स क्या आएंगे? T, capital T. कैपिटल T. खाली एक ही कैपिटल T आएगा? Yes. Capital T, small t with circle. करेक्ट. एंड इसका गैमेट ये आएगा. बराबर है? अभी F2 में Yes, आपको ma'am. ये कॉम्बिनेशन मिल सकता है. That is capital T tall. दूसरा कॉम्बिनेशन आपका F2 का ये आ सकता है, कैपिटल T स्मॉल t tall. Means all are tall. Do you agree with that? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now ये F1 का अपने को जेनेटिक मेकअप पता है, बोलो क्या है? Capital T, small t. रिसेसिव पैरेंट का जीनोटाइप क्या है? Small t, small. ओके. अभी इसका गैमेट्स क्या आएगा? Capital T with circle, small t with circle. इसका गैमेट क्या आएगा? Small t with. अभी इसका जो F2 आएगा वो देखो, ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैपिटल T स्मॉल t दैट इज टॉल. ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्मॉल t दैट इज ड्रॉप. यस और नो? Yes, ma'am. शुभम, ए शुभम दे. यस मैम. आपको ये समझ रहा है? यस किस मैम. स्पीड में पहला है? मैम पहला लेक्चर आपका अटेंड कर रहा हूँ 3 हफ्ते बाद. क्यों? तबीयत नहीं सही थी मैम, इसलिए. क्या हुआ था? मलेरिया टाइफाइड, प्लेटलेट कम हो गया था, लीवर सूज गया था मैम. प्लेटलेट कम हो गया तो डेंगू होएगा. मलेरिया कहाँ से आया? डॉक्टर क्या अनाड़ी है क्या? अरे वो अस्पताल में जाके हो गया. अये यो, तो फिर आपका वो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड का मिस हो चुका है. तो यू ट्राई टू टेल देम टू अरेंज अ सेपरेट क्लास फॉर यू विथ मी, बिकॉज वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये नहीं समझ में आएगा आपको. ओके वो जो मैम. बड़ा था ना, वो जो बड़ा वाला चार्ट है ना, 16 वाला अभी दिखाया था मैंने आपको, समझे ना? जब तक वो क्लियर नहीं होएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, फिर आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है. ये देखो, ये वाला जो है ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये तो खैर अभी कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वाला आपको समझ में नहीं यस आएगा. मैम. ये वाला समझ में नहीं आएगा ना आपको. ओके मैम. अंडरस्टैंड ना? तो यू टेल देम टू यस मैम. अरेंज एंड ऑर्गेनाइज अ क्लास फॉर यू ओके ऑन अ मैम. डेज. ओके. अभी वैसे भी ओके 3 मैम. दिन छुट्टी है ना, मेरे को लगता है कल और परसों 2 दिन तो छुट्टी है, फिर एक दिन मुहर्रम की भी छुट्टी आती है. देखो, इफ एट ऑल एनी टाइम पॉसिबल, सब हाफ एन आवर 45 मिनट्स का उनको बोलो क्लास रखने के लिए, और जिनको जिनको औरों को भी चाहिए तो एक साथ में बोलो तो रिवाइज कर लूंगी. Yes, ma'am. ओके. ओके मैम. ओके मैम. Yes, yes. बेटर, नहीं तो फिर आगे बढ़ के भी आपको तकलीफ होएगी शुभम.
because you are very Yes. slow in taking it up. And sir ने मेरे को बोला था खास आपके साथ में स्लो जाने के लिए, तभी मैं बार बार लेक्चर रूम में आपका नाम पूछती हूँ, तो बीच में 2-3 बार तो आप आए थे ही नहीं, तो बोले नहीं है करके, आज लकीली आप मिले मेरे को. So Yes, ma'am. it's better that you get it clarified all these things beforehand. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. Now, Okay, ma'am. Abhi, should we proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, I have to tell you, supposing I do not know the genetic constitution of this hybrid. ये F1 का मेरे को पता नहीं. Supposing ये F1 capital T है. Supposing F1 is capital T. Crossed with capital T. Then too you will get all tall. Yes, ma'am. Correct. Supposing if this F1 is capital T, crossed with capital T, small t. Sorry, crossed with small t, recessive parent, huh? Crossed with small t. In the F1 generation, next generation, you would get capital T and small t. Here you would have got all tall. Yes or no? You would have got all tall, no? Yes, ma'am. Okay. That means by crossing it with recessive parent, you definitely do come to know whether this F1 is a pure breed or a hybrid. Correct or no? Yes, ma'am. So this cross is becoming a test cross. This cross becomes a test cross, whereas this cross is a back cross. No doubt, both of them are back cross. But back cross, when it is a recessive parent, it is called as a test cross. Ma'am, Hello, हाँ ma'am, repeat करो ma'am. कर रहे हो रिपीट, डोंट वरी. देखो दोनों तो बैक क्रॉस है, वन इज विद डोमिनेटिंग पेरेंट एंड वन विद रिसेसिव पेरेंट. Yes, दोनों ma'am. बैक क्रॉस है, लेकिन एक बैक क्रॉस ऐसा है जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो वेदर वो प्योर है कि इम्प्योर है. दैट इज विद डोमिनेटिंग पेरेंट. बट if you're crossing the F1 generation with the recessive parent, yes, definitely you can identify whether it is a pure or impure. I told you, I am not sure. ये इधर मेरे को मालूम पड़ा ये tall है सिर्फ, heterozygous भी नहीं, खाली tall है. If this tall, F1 tall is crossed with recessive parent, I am getting tall as well as drop. Recessive parent का मेरे को ये मालूम है जीनोटाइप, मगर इसका मेरे को मालूम नहीं था जीनोटाइप. करेक्ट हो ना? तो मैं इसका दो टाइप हो सकता है, या तो हाइब्रिड हो सकता है, या तो हेटेरोजाइगस हो सकता है. सॉरी, या तो होमोजाइगस हो सकता है, या हेटेरोजाइगस हो सकता है. अगर जो होमोजाइगस है तो मुझे सारे टॉल मिलते थे, जैसे ये वाला था. Yes, ma'am. करेक्ट. लेकिन मुझे टॉल और ड्रॉप मिले हैं F2 जनरेशन में, because I've got tall and drop, so I could identify or I could check the genetic constitution of the F1 that it is a hybrid tall. So this back cross, which is with the recessive parent, is said to be a test cross. Clear है अभी concept? हाँ, ma'am. कि एक और बार करना है? एक और बार कर लो, no problem my dear. I will do it on the next page. आप लोग मेरे को बताएंगे वापस क्या है क्या नहीं Yes, है. ma'am. फिर से बताओ, फिर से बताना. Yes, ma'am. You are going to tell me. Yes, ma'am. Parent P1, genotype, gamete, F1. Parent P2, genotype, gamete, F2. Pure breeding tall plant crossed with pure breeding dwarf plant. Tall का genotype अपने को पता है? Yes, ma'am. Anybody Capital can T, say? capital T. Dwarf का genotype? Small t, small t. Okay, gamete of this tall Capital T. Capital T with circle. and gamete of the dwarf?
Small t with circle. Very good. What is F1? Capital T, small t. It is called as what? Heterozygous tall. Okay. Heterozygous और hybrid tall. अभी parent P2. मेरे को ये पता नहीं है, मेरे को खाली ये पता है tall है. So I am saying F1 tall crossed with dominating parent. F1 tall crossed with recessive parent. Do you all agree? Yes, ma'am. Now, dominating parent का मुझे पता है इतना कैपिटल टी आएगा. इसका गैमेट मुझे पता है कैपिटल टी ओनली आएगा. क्योंकि F2 है तो F2 में मुझे सारे के सारे टॉल मिलेंगे, क्योंकि ये तो टॉल आ गया ना एक. फिर चाहे इधर ये तो बोलता है टॉल है, ये टॉल ऐसा भी हो सकता है, ये टॉल ऐसा भी हो सकता है. Yes, ma'am. क्योंकि F1 का मेरे को जेनेटिक मेकअप नहीं मालूम है, तो ये ऐसा टॉल है. अगर जो मैं कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी लेती हूँ तो भी मुझे सारे टॉल मिलते हैं. अगर जो मैं कैपिटल टी स्मॉल टी लेती हूँ क्रॉस्ड विद दिस कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद दिस, तो आई विल गेट द गेमेट्स एज दिस. देन तो आई एम गेटिंग ऑल टॉल. यस और नो? एक कॉम्बिनेशन ये आता है, Yes, ma'am. कॉम्बिनेशन ये आएगा. मुझे सारे के सारे टॉल ही मिलते हैं ना. हाँ मैम. Ma'am. Okay, so this is a back cross. This is a back cross. Now, here I am taking F1 tall cross with recessive parent. अभी recessive parent का मेरे को genetic makeup पता है. क्या होना चाहिए recessive parent का genetic makeup? Small t. Small t. उसका जीना gamete, उसका वो भी gamete मुझे पता है small t आएगा. करेक्ट. अभी Yes, ma'am. इधर का मेरे को डाउटफुल है. मेरे को पता चला F2 में मुझे मिलता है टॉल और ड्रॉ. करेक्ट. ये क्रॉस करती हूँ तो मेरे को टॉल और ड्रॉप मिलता है, लेकिन मेरे को इसका नहीं पता है. सपोजिंग ये कैपिटल टी होता तो ये कैपिटल टी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो मुझे सारे के सारे टॉल मिलते. Yes मैम. तो अगर जो वैसा नहीं है तो दिस इज कैपिटल टी विथ स्मॉल टी. Yes So मैम. the gamete over here will be capital T with a circle, small t with a circle. So I am getting one tall, I am getting one drop. Yes हाँ, or ma'am. no? Yes So this मैम. in turn, the ratio of tall and drop is 1:1. Means what? Yes ma'am. When I'm crossing here with recessive parent, it is a back cross. It is a back cross. But here I could test the genetic constitution of F1. कि वो प्योर है कि हाइब्रिड है, इम्प्योर है. ये प्योर है कि इम्प्योर है मैं चेक कर सकी. अगर जो ये प्योर होता तो मुझे इधर सारे टॉल मिलते, लेकिन मुझे सारे टॉल नहीं मिले, मुझे टॉल और ड्रॉप दोनों मिले हैं. करेक्ट हो नो? क्योंकि मुझे दोनों मिले हैं तो आई कॉल दिस क्रॉस टू बी अ टेस्ट क्रॉस. आई कॉल दिस क्रॉस टू बी अ टेस्ट क्रॉस. नाउ हाउ विल आई डिफाइन इट? बैक क्रॉस. The F1 is crossed with dominating or recessive parent is called as back cross. When the F1 is crossed with the dominating or the recessive parent, it is called as a back cross. बराबर है? Am I right, my dear friends? Yes, ma'am. Okay. Next is test cross. The F1 is crossed only with recessive parent. That time we call it as a test cross.
Am I right now? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now the statement is there. Now a statement comes. Now the statement is there. All back crosses are not test crosses, but all test crosses are back crosses. Is the statement valid? Yes, ma'am. Do everyone agree with the statement? Ha, ma'am. Perfect. No problem till here? Yes, No, ma'am. Okay. Now we proceed further for another thing, and that is nothing but a test cross for a dihybrid thing. Test cross for dihybrid one. We are taking pure breeding. We take pure breeding, tall and round seeded plant crossed with pure breeding, dwarf and wrinkle seeded plant. That is parent P1. Then genotype. कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर डाइब्रिड है ना, इसके लिए दो कैरेक्टर्स है, टॉल एंड राउंड, समझे Yes, ना? ma'am. क्रॉस विथ ड्रॉफ एंड रिंकल्ड. वो मैं है ना W लिख रही थी छोटा r लिखने के जगह पे, इसके लिए. नेक्स्ट इज गैमेट. कैपिटल T कैपिटल R क्रॉस्ड विथ स्मॉल t स्मॉल r. F1 कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, हाइब्रिड और heterozygous, tall and round. Agreed? Now, Yes, ma'am. parent P2, F1 crossed with recessive parent. One second here. Hello? Yes. I don't know who was it. Okay. Genotype. F1 का जीनोटाइप अपने को पता है यहाँ पे, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट, दैट इज स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r. करेक्ट. इसका गैमेट्स क्या आएगा? कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r. यस और नो? इसका गैमेट Yes, आएगा ma'am. स्मॉल t स्मॉल r. बराबर है? अभी मैं Yes, यहाँ पे ma'am. लिखती हूँ, ये सपोजिंग मैं इसको चेकर बोर्ड में ले लेती हूँ. इधर स्मॉल t स्मॉल r. ठीक है, तो इधर मेरे को मिलेगा कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r. ये दिखने में टॉल राउंड होएगा. बराबर है? Yes, ma'am. सेकेंड वाला कैपिटल T स्मॉल r, ये टॉल रिंकल्ड होएगा. टॉल राउंड, टॉल रिंकल्ड. नेक्स्ट वाला स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, that is dwarf round. Correct? And small t small r, that is dwarf wrinkled. बराबर है? यही मिला ना अपने को? yes, All are in the ma'am. ratio of 1:1:1:1. आपका मोनोहाइब्रिड का क्या था? 1:1 टेस्ट क्रॉस, टॉल एंड ड्रॉप. सॉरी, टॉल एंड ड्रॉप. सेम में राउंड एंड रिंकल्ड 1:1. तो आपको क्या मिलेगा? 1 1 1 टॉल राउंड, 1 1 1 that is drop round, 1 1 1 that is tall wrinkled, 1 1 1
that is drop wrinkled. बराबर है? तो अपने को वही मिला है ना यहाँ पे, Yes, ma'am. बराबर है? हाँ, This can ma'am. be checked. This can be checked. 1 second. This can be checked. वो ये जो स्क्वायर का दिखाया था ना आपको, हाँ मिला. Check it over here. The last row you check. ये वाला फर्स्ट है, बीच का सब छोड़ दो, ये लास्ट को देखो. Are you getting the same thing right now? Yes, ma'am. Huh? That means our perfect, our cross is perfect. This is the test cross diagonal ratio, that is 1:1:1:1:1. That is 4 times 1. No problem till here? Can we proceed now? Yes, ma'am. Now we are proceeding towards the another cross or something deviations from the Mendel's, wherein the monohybrid and apna, wherein the genotypic and the phenotypic ratios are identical. Genotypic and the phenotypic ratios are identical. That cross we are doing. It is said to be incomplete dominance. Correct? In this case, we are taking a plant named as Mirabilis chalapa. This is called as evening 4 o'clock plant. Mirabilis chalapa, it is called as evening 4 o'clock plant. During the evening time, only the flowers are blooming. Correct? You call it as gulabhas. Maharashtrians usually make a veni of it. वो रानी कलर का फ्लावर्स आता है, पतला पतला, अबोली के जैसा, अबोली के सब पीच कलर का आता है ना, वैसे रानी कलर का आता है. आजकल यू आर गेटिंग इवन व्हाइट कलर फ्लावर्स, बट इन दैट व्हाइट कलर फ्लावर्स आल्सो समटाइम्स यू गेट रानी कलर स्ट्राइएशंस, ऐसा लाइन 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 लगे शेडिंग आता है. सो दिस आर बेसिकली अबोली फ्लावर्स. और एल्स इफ यू कैन रिकलेक्ट ड्यूरिंग स्कूल टाइम्स, यू यूज्ड टू गो, अपना बारिश का सीजन में एरियाज जो रहते हैं ना अनवांटेड एरिया, उधर जंगल के जैसा उग जाता था, देयर यू माइट गेट दिस फ्लावर्स. And there people used to go and get the seeds of these flowers from this plant. They used to collect the seeds. और वो बेंच पे ऐसे रगड़ रगड़ के हम लोग किसी को मारते थे, तो बोलते थे झटके वाला सीड है. फिर हम लोग एक दूसरे से पूछते थे किधर से लाया करके, तो बोलते थे इधर इधर है. तो हम लोग जाते थे कलेक्ट करके लेके आने के लिए. तभी इतना फिजिक्स का नॉलेज नहीं था. तभी हम लोग को क्या था कि भाई हाँ ये सीड में ही झटका लगता है इसके लिए. लेकिन वो तो बाद में पता चला फ्रिक्शन की वजह से होता है. फिर कोई भी सीड ले लो ना, काय के लिए खाली वो जंगल में जाके लेने का. Correct? Because of the friction, the heat was generated and you got the झटका. Basically, वो बाद में पता चला ना, लेकिन पहले तो हम लोग वो सीड के पीछे भागे. So this is nothing but Mirabilis chalapa plant. Correct? This Mirabilis chalapa plant is having the color of the flowers of 2 different types. That is red and white. Red and white color flowers. Parent P1. A pure breeding red color flower. Crossed with pure breeding white color flower. Genotype gamete F1. Parent P2. Genotype gamete F2. ये प्रोसीजर सबका सेम है. मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, कुछ भी होने दो, ये प्रोसीजर सबका सेम है. कोई भी क्रॉस ले लो. करेक्ट? नाउ अर्लियर व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को कंफ्यूजन कम करने के लिए सिंपल कर दिया टेक्स्ट बुक में, लेकिन जब हम बच्चे लोग थे तभी हम लोग को ये बोला था ये लिखने के लिए इसका सिंबल अलग था. मींस द कैरेक्टर टू आइडेंटिफाई वाज डिफरेंट. इट वाज रिटन एज कलर रेड and the other one was color white ऐसा करके. लेकिन आप लोग का टेक्स्ट बुक इज मेंशनिंग कैपिटल R crossed with capital W
इधर स्मॉल आर नहीं आएगा, बी केयरफुल, योर कैरेक्टर इज टोटली डिफरेंट. Yes, ma'am. Agree? Now, here it is capital R once, here it is capital W once. Agreed? Now, F1 Yes, will ma'am. be capital R, capital W. अभी इसको क्या बोलोगे? हाइब्रिड व्हाइट बोलोगे, हाइब्रिड रेड बोलोगे, क्या बोलोगे? क्या बोल सकते हैं, बोलो. Hybrid red. नहीं, इसको ना तो हम लोग हाइब्रिड बोलेंगे, हम लोग इसको बोलते हैं पिंक. दोनों अपना रंग जमा के दिखाते हैं, आपस में टकराते हैं. Yes, ma'am. Red with white, pink. You are getting pink flowers. So parent P2, pink crossed with pink. Pink अपने को जीनोटाइप मालूम है? RW crossed with RW. Yes or no? Gametes. Yes, ma'am. R and W crossed with R and W. Okay. F2 generation क्या आएगा बोलो? एक कॉम्बिनेशन ही आएगा. Yes or Capital no? R, capital R. Capital R, that will be red. एक कॉम्बिनेशन ये आएगा. Yes, ma'am. That is what? बोलो. Capital R, capital W. Capital R. Capital R and capital W. This will be in appearance what? Pink. Pink. Okay. Take the next one. Capital R, capital W. देखने में कैसा होएगा? Pink. Pink. ये वाला Capital Capital W, capital W, capital W. देखने में कैसा रहेगा फ्लैश? white. 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 तो अभी इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या है? बोलो. What is the phenotypic? What is the genotypic ratio? 1:2:1. 1:2:1. 1 is what? Red. 2 is what? Pink. 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 1 is what? White. 1 is white. Genotypic ratio क्या है? Red is to pink is to white. Red is to pink is to white. वो भी 1:2:1 है ना? Yes, ma'am. तो phenotypic और genotypic ratio दोनों सेम ही है ना? Yes, हाँ, ma'am. ma'am. हाँ, तो this is called as incomplete dominance, in which phenotypic and genotypic ratio are similar. अभी तक मोनोहाइब्रिड में आपको क्या मिला था? phenotypic ratio आपको 3:1 मिला था. 3 tall is to 1 dwarf. करेक्ट हो नो? लेकिन अगर जो आपने जीनोटिपिक रेशियो देखा तो आपको जीनोटिपिक रेशियो कितना मिला था? 1:2:1. याद आ रहा है धुंधला सा? हाँ. Yes, ma'am. करेक्ट. लेकिन यहाँ पे आपका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम है, 1:2:1. करेक्ट हो नो? क्योंकि हाँ, ma'am. जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर सिमिलर. दिस क्रॉस इज सेड टू बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस. This cross is said to be incomplete dominance. Correct? No problem? No, ma'am. No, The ma'am. characters are merging. The characters are merging also. The characters एक साथ जब जनरेशन में रहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या बोलते हैं? दो कैरेक्टर्स एक साथ में थे, लेकिन जब गैमेट्स बने तब सेग्रीगेट हो गए. लेकिन यहाँ पे तो मिक्स हो गए ना, पिंक बन गया ना. हाँ, ma'am. Yes, ma'am. अलग हो गए. You have I think the time will permit me to do ना. Yeah, it will do. ये हो जाएगा. कोडोमिनेंस. गाय भैंस होती है ना, गाय
by the S cattle. हाँ मैम. Same way, red and white. And ये combine होके RW होएगा तो इधर pink नहीं होता है, इधर roan होएगा. Now, I am taking parent P1. Pure breeding red skin color crossed with pure breeding white skin color. Genotype RR crossed with WW. Same it is, guidelines. Gametes, capital R, यहाँ पे capital W. F1 RW. यहाँ पे मैं इसको रोन बोलती हूँ. करेक्ट. अभी रोन में क्या होता है, ये तो मर्ज होके पिंक कलर बन गया. व्हाइट और रेड को आप पिंक करते हो, मिक्स करते हो पेंटिंग्स में तो आपको पिंक कलर मिलता है. इधर क्या होएगा, ये स्किन का पैच है. सपोजिंग एक चमड़ी का मैंने एक पैच लिया है, तो यहाँ पे आपको ये रेड मिलेगा, दूसरा पैच व्हाइट मिलेगा, ये रेड व्हाइट ऐसा करके पैचेस मिलता है. करेक्ट. Yes मैम. क्या चाहिए? अच्छा ठीक है, मिला ना. हाँ. ठीक है. So this you are getting it as roan color. Now this roan is undergoing selfing, you can say inbreeding. Agreed. So parent P2. Genotype, gametes, and F2. Parent P2 is roan crossed with roan. Genotype, gametes, one combination is this, second combination is this, third combination is this, fourth combination is this. So this will be red, these two are roan, and this will be white. जो आपको उधर पिंक मिला था, इधर मैं रोन लिख रही हूँ. Same it is, just see. Correct or no? Yes ma'am. Yes मैम. So the phenotypic ratio इधर क्या आएगा? 1:2:1. And genotypic ratio is 1:2:1. 1:2:1. One is red, then is roan, and then is white. White. Again, phenotypic and genotypic ratio are similar. So this is called as codominance. Okay, this is called as codominance. Now, just see this. Incomplete dominance. In incomplete dominance, both the alleles or the genes of an allelomorphic pair express themselves partially. One allele gene cannot suppress the expression of the other allele gene completely. In such case, there is an intermediate expression in the F1 hybrid. A well-known example is of the flower color of Mirabilis jalapa. If a red flowered RR plant is crossed with a white flowered smaller plant, then the F1 offsprings have pink flowers, that is capital R, small r flowers. Correct? That is, they have made simple for you. ये हम लोग ने किया था already. Result is the genotypic and phenotypic ratio are similar, 1:2:1. Then codominance. In codominance, both the alleles, genes of an allelomorphic pair express themselves equally in F1 hybrids. Such alleles which are able to express themselves equally independently in the hybrids are called as codominant alleles. Thus, in codominance, both alleles are expressed. Classic example of codominance is coat color of in cattle. There are two types, one with red coat, that is red color hair, and the other one with white coat with white hair. When red cattle are crossed with white color cattle, that is F1 hybrids, are roan. Roans have a mixture of red and white color hair. Thus, both the traits are expressed equally in F2 generation.
red, roans, and white are produced in the ratio of 1:2:1. Thus, codominance, the genotypic and the phenotypic ratio are identical. Just see here, red is crossed with white. You are getting this way patches of red and white. Roan. This roan is crossing. You get one pure red, two patched wala red, and one white. Very clear? So whatever we have done is perfect. Do you all agree? मैम हाँ जी. मैम इनकम्प्लीट में भी सेम है रेशियो और इसमें भी सेम है, फिर कैसा समझेगा कौन सा है? मैम डिफरेंस क्या है दोनों में? वो लोग अभी वो आ रही हूँ, वो दोनों का डिफरेंस पे आ रही हूँ. एक में वो मर्ज हो जाता है, एक में मर्ज नहीं होता है. एक में इट इज पार्शियल, एक में इट इज टोटली. वो अभी आ रही हूँ, वो मैं बता रही हूँ. दोनों का डिफरेंस क्या आता है वो अभी आ रही हूँ. Incomplete dominance and codominance. The genes which are able to express themselves partially in F1 generation. The genes which are able to express themselves equally in F1 generation. दोनों अपना रंग जमा के दिखा रहा है. रेड भी दिखा रहा है, व्हाइट भी दिखा रहा है, रेड भी दिखा रहा है, व्हाइट भी दिखा रहा है पैच. और इसमें क्या है, पार्शियल है, मिक्स हो गया ना वो. हाँ मैम. इसके लिए in this, it is a phenomena in which neither of the alleles of the gene is completely dominant over the other. It is the phenomena in which the two alleles of the gene are equally dominant and express themselves in the presence of the other when they are together. Dominating है दोनों, और दोनों जब present है तो हम जमा के दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं. Understood ना? Then blending or intermixing of the two alleles is observed. No blending or intermixing of the two alleles is observed. इधर मिक्सिंग हुआ था, इधर नहीं हो रहा है. हाँ मैम. रेड पैच अलग था, व्हाइट पैच अलग है, इधर पिंक हो गया था. One allele cannot suppress the expression of the other completely. Tall and drop में कैसा completely suppress कर दिया था, इसमें totally suppress नहीं कर रहा है. वो रंग दिखा रहा है, तभी तो आपको पिंक मिला ना, नहीं तो आपको रेड ही मिलता था. Correct? That is the reason why. Yes ma'am. One allele cannot suppress the expression of the other completely. The alleles in one pair are able to express themselves independently even if present together in the F1 generation. The phenotype of the F1 is intermediate between the phenotypes of the parents. दोनों के बीच का character है उसमें. The phenotypes of the F1 equally express the phenotypes of both the parents independently. इसमें दोनों दिखाते हैं, red, white, red, white, red, white, ऐसा. Correct? F1 is pink. F1 is roan, that is red and white color patches side by side. Phenotypic and genotypic ratio is 1:2:1. Phenotypic and genotypic ratio is 1:2:1. Example is pink color of Mirabilis jalapa or evening 4 o'clock plant. Example is roan coat color of cattle. Now I'll just move the mobile on this distinguishing. Go through it properly, please. Can you see? Good, make out? Should we proceed further with another unit now? Yes, What is the ma'am. time? Ma'am. 2 minutes are there. 6 o'clock.
Yes, wait 1 second. In codominance and incomplete dominance, the phenotypic and genotypic ratios are identical. Explain how they differ in their phenotypic nature in F1 generation. In codominance, the F1 shows equal expression of parents in its phenotype, whereas in incomplete dominance, the F1 shows intermediate expression of parents in its phenotype. समझा? हाँ? मैम ये पॉइंट रिपीट करो ना एक बार. In codominance and incomplete dominance, the phenotypic and the genotypic ratios are identical. ये तो अपने को पता है. Yes. Explain how they differ in the phenotypic nature in the F1 generation. F1 generation में वो लोग दोनों अलग-अलग कैसे हैं? अगर जो आप codominance में देखते हो, having patches of red and white. अगर जो incomplete dominance देखते हो, तो आपको pink color दिखता है. Correct? Yes, ma'am. That is what they are mentioning. In codominance, the F1 shows equal expression of the parents in its phenotype. Patches दिख रहे हैं ना? Equal expression of the parents. Whereas in incomplete dominance, the F1 shows intermediate expression. वो दोनों mix हो जाते हैं ना? Correct? Intermediate expression of the parents in its phenotype. Very clear now? Yes, ma'am. Next, explain codominance in human blood groups. अभी वो आएगा. In codominance, the genes of the alleles were able to express themselves equally in F1 generation. Thus, it is observed that both the alleles are able to express themselves equally independently in F1 generation. Thus, both the alleles are expressed. Explanation. Codominance is a type of intragenic interaction. Like how you'll say, there is a competition in your own college, correct? 11 standard students, 12 standard students, degree level. So it is said to be a competition which is intra-collegiate. Intra, अपना खुद का college का competition है, correct? But आपका college is associated with the neighboring colleges, correct? Yes, ma'am. Is having competition with the neighboring colleges. Then you call it as intercollegiate. Correct? हाँ ma'am. The same thing over here. Codominance is the type of intragenic interaction. That is same gene ka interaction it is. That is, there is an interaction between the alleles of the same gene. Just told you all. The example of human blood groups are also to be can also be considered as for multiple alleles. ये हम लोग next time करेंगे. I think the time is up. I was told it's 6 o'clock. The lecture is supposed to be there. But what is the time now? It is 6:01. Okay. So we will continue from here next time. Okay. Yes, ma'am. So wish you a very happy Independence Day. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.